So, very good afternoon. So, we have studied about the generations in our previous lecture, that is generation 1 which is substrate control, generation 2 which is auxiliary control, generation 3 that is reagent control, and what is generation 4? Catalyst control. Okay. So, till now you know what are the methods and how you can prepare the pure chiral compounds. Now we have to go about one very important part, that is the basis of asymmetric synthesis. The important thing which you have to check in all these 4 generations, which we have already gave a glimpse of that in our previous lecture, that how this can be done. Now, if you have to check this synthesis with respect to chemical kinetics, and for any chemical reaction what we are generally talk about in terms of kinetic, that is a rate of reaction from substrate to product via some transition state or an intermediate. How fast you reach the transition state, how fast the transition state or the intermediate turn into your product, you check it with rate constant. Okay. So, that is a very simple reaction. If you see on your screen what we are writing, that from a substrate which is a prochiral, तो prochiral substrate क्या लिया था हमने? Any example of prochiral substrate? Cyclohexanol, a simple aromatic ring with carbonyl group, that is your prochiral. Now you are going to get 2 type of products, okay, either the R or S. Why we are saying either R or S? Because we are doing asymmetric synthesis. Our objective is to either get exclusively R or exclusively S. So, just see in terms of kinetic, we can say from substrate to product R or from substrate to product S. So, this conversion is calculated via a rate constant. So, you say it is either Kr or Ks. So, in terms of simple kinetics, we have to see the comparison. Okay. We have to see the comparison, how fast and transition state and intermediate can be converted into your desired enantiomer, whether it is R or whether it is S. So, how this rate is going to check? If you see a simple rate equation, you do not have to go about this rate equation, but only one terminology which I just wanted to take from it. Okay, I am not a physical chemist where I am going to tell you the all about this equation, but if I say give some evident support for particular formation of isomer or enantiomer, how we have to look it. So, in a simple way, from substrate to product via rate constant, you are going to check. So, if you check the rate constant equation, in all the parameters there is an important factor, that is change in energy, that is the activation energy. For example, your substrate is converted into product when that activation energy is reached, when you reach the transition or intermediate state, then you will get your product. So, in whole this scenario, the difference which you have to create is with respect to activation energy. Okay. So, if your change is 0, for example, say in a simple way, 5 kilojoule energy is required for both the enantiomer. You provide the 5 kilo, 50% you will get it. But if there is a difference in activation energy of one enantiomer and the other,
then you can provide the energy for that. Okay. So if we are seeing this graph, greater the difference in energy, higher the selectivity, because you want to prepare enantiomer selective or enantiomer specific. Say in a layman language, we are not talking about as a scientist. We have to explain to some kid about this. We can say that if we have to make A, we have to give 5 kilojoule energy, and if we have to make a B, we have to give 3 kilojoule energy. Okay. Now if your industry or your system is providing you, or you are giving only 3 kilojoule energy, will you able to get A? Because A के लिए तो कितनी चाहिए थे? 5 kilojoule. So this is a simple concept that if we want to create only one particular type of enantiomer, how we can deviate their transition state, how we can make one enantiomer transition state so high in energy that cannot be easily achieved, whereas the other enantiomer, which is our target one, we can minimize its energy so that it can be supply and you will get your product. Okay. अभी ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. फाइव आपने कर दी तो जो आपका सबस्ट्रेट है उसके चांसेस सबसे पहले जो 3 है वो रीच्ड हो गई, तो योर सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू व्हाट 1. जब आपने 3 की एनर्जी रेज, योर सबस्ट्रेट इज कंज्यूमिंग, यू आर नॉट एडिंग सबस्ट्रेट साइड बाय साइड, you have taken it in starting. Okay, you provide the 3. So if you have taken 100%, as the 3 barrier is reached, you are getting exclusively 1. Okay. So if you see in that graph, what I want to say, you see we said that 2 type of enantiomer, one is S and other is R. Okay. If you see, we are writing prochiral adduct. Okay. यहाँ पे आपको ये देखना है, this is your prochiral substrate. Now see, there are 2 transition states, one is for S and one is for R. So that has been written transition state S and transition state R. If they are going to make as a 50-50, their transition state barrier with energy level should be same. Okay. So if you start from the prochiral adduct, now can you see in figure which enantiomer is in larger quantity? That is the R1. The S enantiomer is very little. Why? If you see the comparison, the change in energy with respect to R and S has been down with the presence of some chiral auxiliary reagent. Okay. So now in a very simple way, if I am saying you are getting 50-50% of both the enantiomer, that's mean both the enantiomer have the transition state with same energy level. Okay. You are providing that energy, both transition states have been reached, then your product start forming. But if somehow, what I am saying, if somehow you are able to differentiate, you are able to change the energy of these 2 transition states, then you have a chance to reach your enantio selectivity or enantio specificity. So how you can change that? For that you required some chiral auxiliary reagent.
So that reagent is such a specific that out of the two transition state, it is helping to reduce the activation energy of one transition state, not the other. So whose activation energy is comes down, the percentage of that enantiomer is going to enhance. Okay. So if we have to study of all this discussion, okay, तो हमारा फिर conclusive point क्या होगा? What we have to conclude from here? The important conclusion is what? Non-equivalence. तो इसको अगर आपने याद रखना है या माइंड में बिठाना है तो इज अ सिंपल वे विच आई गेव द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल में कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, CH2 के भी है, ऑक्सीजन के भी हाइड्रोजन है, लेकिन जब आप इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो तीनों ही अलग तरह से रेजोनेट कर रहे हैं, वो तीनों ही अलग तरह से कपल कर रहे हैं, तीनों ही अलग तरह से अपनी पीक रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आपने क्या देखा उस मॉलिक्यूल में? ऑल्दो CH3 हैज 3 हाइड्रोजन which have the same environment, CH2 has 2 hydrogen which has the same environment, OH has 1 hydrogen which has the different environment. So the question is that what have to done to get enantiomer selectivity? The only thing is that to create the non-equivalence. Okay. So in this case, how this non-equivalence has been created? Just by differentiating the energy barriers of both enantiomers transition states. Clear? आपको clear हो गया है? Okay. You want to ask something? Okay. कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी? ओके. जो मॉलिक्यूल आपका बन गया है उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो तो आपका लोअर एनर्जी लेवल पे ही आ गया है ना. ओके, आई पुट इन अ वेरी सिंपल रिएक्शन. व्हेन यू आर डूइंग अ रिएक्शन इन लेबोरेटरी, you are refluxing the material, like you took ethanol, you put your substrate and do the refluxing. The amount of energy which is required for your product to form after the formation is ethanol temperature comes directly to 0. It will take time. So if the solvent is present, your energy is trying to take that solvent in a evaporate form. Okay. But your product is stable in ethanol. That energy, until and unless you keep refluxing it, then it is going to melt your. Okay. So whenever a plan of this reaction is there, you are using a chiral auxiliary reagent, it should be kept in mind that this requirement should reach in such a way that your products remain stable in that. Otherwise you have to immediately stop it. You have to distill out the solvent so that your product will remain it. Okay. So sometimes if some substrate is left, that energy can be used for rearranged product. Your yield will be low, but as soon as possible you have to get rid of that extra. Whatever the extra is there, you have to take challenge of that and you have to get rid of extra. Okay. So now I am concluding of these 2 slides in a way that what exactly we have to see. So just see the last line, what we have written: for the reaction to be stereo differentiating, these diastereotopic phases must be non equivalent. So सारी asymmetric synthesis में
जितनी भी आप जनरेशन 1, 2, 3, 4 किसी भी तरह की सिंथेसिस कर लो, उसमें सिर्फ एक काम करना है, इफ यू चूज अ सबस्ट्रेट, if you choose a auxiliary, if you choose a reagent or if you choose a catalyst, they all four will be capable of creating the non equivalence. तो अब मुझे जरा बताओ, जनरेशन 1 में जाओ तो जो उसमें जो सबस्ट्रेट है वो नॉन इक्विवेलेंस कैसे क्रिएट कर रहा था? कैन यू रिमेंबर द एग्जांपल? इन आवर जनरेशन 1 वी हैव अ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के साथ आपके पास कायरल यूनिट थी, कायरल यूनिट में क्या लगा था? हाइड्रोजन बिलो द प्लेन मीथाइल, सो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दी, नीचे जब आएगा ग्रुप तो उसको हाइड्रोजन मिल रहा है, ऊपर जो ग्रुप आएगा उसको क्या मिल रहा है? मीथाइल. सो यू differentiated the two phase for the incoming group. Now the incoming group will choose which one will be the better one to enter. Okay, so अब आप सोचो सारी सिंथेसिस का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है? टू क्रिएट नॉन इक्विवेलेंस, क्योंकि अगर नॉन इक्विवेलेंस नहीं हुई फिर तो रेसमिक है, फिर तो 50-50 है. ओके, so since the transition state TSR and TS leading to R and S products are diastereomers, therefore they are non equivalent. अब आप सोचो नॉन इक्विवेलेंट कैसे हुई क्रिएट? आपके पास कायरल एनेंटियोमर बन रहा है, आपने कायरल ऑक्सिलरी डाल दी, कायरल आपके पास सबस्ट्रेट था, कायरल ऑक्सिलरी आपने डाल दी तो दो कायरल सेंटर आ गए, 2 आ गए तो क्या बन गया? डायास्टीरियोमर्स. सो डायास्टीरियोमर कैन बी डिस्टिंग्विश. इनेंशियोमर नहीं होते थे, अगर नेचर ने इनेंशियोमर ही कर दिए होते तो आपको इस प्रॉब्लम से एसिमेट्रिक सिंथेसिस ही नहीं करनी पड़ती. अगर वो डिफरेंशिएट होते, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग दे देते तो आप ऐसे ही उनको इनेंशियोमर को रेसमिक मिक्सचर को यूज कर सकते थे. सो दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ diastereomers. So these transition states differ in energies. Okay, now in most of the stereo differentiation reaction the difference in activation energy is 2 to 3 kilocalorie per mole. आप मैक्सिमम जो रिएक्शन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के एसिमेट्रिक सिंथेसिस में कर रहे हैं. इन दैट केस फ्रॉम 1 enantiomer to 2nd enantiomer अगर आप 2 to 3 किलो कैलोरी का डिफरेंस भी अगर कर सकते हो, योर स्टीरियो सेलेक्टिविटी और enantio सेलेक्टिविटी कैन बी अचीव, एंड दिस इज वेरी मार्जिनल डिफरेंस. बहुत ज़्यादा नहीं है कि यू रिक्वायर समथिंग विच हैव टू क्रिएट अ बैरियर ऑफ 10 to 15 किलो जूल एनर्जी. यू रिक्वायर्ड ओनली 2 to 3 किलो कैलोरी पर मोल. Also in majority of asymmetric reaction it is only transformation of an sp2 to sp3. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका sp2 है, कार्बोनाइल sp2 है. अब उस पर जब आप एक ग्रुप लेके आ रहे हो तो कार्बन की वैलेंसी 3 से कहाँ कर रहे हो? 4 में, टेट्राहेड्रल. सो दैट इज योर sp3. तो चेंज जो है वो sp2 से sp3 है. ओके, बहुत बड़ा चेंज नहीं रिक्वायर्ड है इस केस में. सो दस इन दिस रिएक्शन इट इज ओनली द स्टीरियो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फेसेस. व्हाट आर दैट 2 फेसेस? अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, हमने प्लेन में दिखाया है, रेड बॉक्स में आप देखो, कार्बन एयर ए इट इज अ डबल बॉन्ड. ओके, सो अगर आप इसको प्लेन में देख रहे हो तो आपको सिर्फ 2 फेस की वरी करनी है. कौन सा फेस? एक आपका फ्रंट फेस, दैट इज योर साइफ और री. आपको सिर्फ ये 2 फेस के ऊपर ध्यान रखना है, किस तरह से नॉन इक्विवेलेंस इनमें क्रिएट की जाए तो आपका हो सकता है. क्लियर? सो अगर अब आपसे पूछे कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस अचीव करना चाहते हैं, इफ आफ्टर दिस क्लास एनी पर्सन कैन केम टू यू कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है, इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? सर कुछ नहीं है, इनेंशियोमर
सिर्फ फेज से ही डिफ्रेंशिएट होता है। तो अगर हम नॉन इक्विवेलेंस क्रिएट कर दें किस रिएक्शन में, तो आपका इनेंशियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द ओनली रीजन दैट which you have to see। ये आगे मूव नहीं कर रहा। ये इसमें चल नहीं रहा है। आगे कहाँ? ओके। So for the reaction to be stereo differentiating, you require non-equivalence. How this non-equivalence can be created? ये आपने सुबह किया है। पहला पॉइंट क्या बता रहा है? The non-equivalence of phases may arise in three ways. What is that phase? Firstly, there may be one adjacent stereogenic center in the substrate which renders one phase more sterically encumbered than the other. क्या मतलब क्या है इसका? कि आपके सबस्ट्रेट में जिस फंक्शनैलिटी पे आप रिएक्शन परफॉर्म करना चाहते हो उसके एडजेसेंट में एक ऐसा सेंटर प्रेजेंट हो जो स्टेरिकली एक फेस को ब्लॉक करे, दूसरे फेस को ओपन करे। सो दिस इज आवर जनरेशन फर्स्ट। सेकेंड, in this case auxiliary also comes in this. Second, the attacking species may contain a stereogenic center which cause it to interact with the substrate more favorably with one phase than the other. Okay, substrate आपका बड़ा सिंपल है, लेकिन जो ग्रुप आ रहा है उसके पास ही कुछ ऐसा प्रेजेंट हो that it try to fit only from the one side, not from the other side. Okay, in this way we can create the non-equivalence. Third, neither the substrate nor the reagent on their own may be chiral, but the attack is mediated by chiral catalyst. ओके, हमारे पास सबस्ट्रेट में कायरलिटी नहीं है, कोई ऑक्सिलरी आप अटैच नहीं कर पाए, रिएजेंट में भी कायरलिटी नहीं है, चलो कैटलिस्ट मस्ट हैव समथिंग दैट एबल टू डिस्टिंग्विश दी बोथ दी फेसेस, सो दैट to sum up the heart of asymmetric synthesis, it lies the non-equivalence of diastereotopic phases which subsequently brings in the difference in the energy of activation. अब बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल, जस्ट ओनली वन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से एक टर्मिनोलॉजी आती है diastereofacial selection or phase blocking. Okay, now in this reaction, okay, if I simply say can you visualize this carbonyl group CO? आपने इस रिएक्शन में क्या विजुलाइज करना है? इन दिस रिएक्शन यू हैव टू से दिस इज योर X, दिस इज योर CO एंड दिस इज योर R ग्रुप। ओके, ये आपने विजुलाइज करना है। और आई कैन से यू विजुलाइज दिस फोन एज अ CO ग्रुप। ओके, ये आपका, मैं आपको चलो ऐसे शो करता हूं, ये आपका कार्बन है। ओके, दिस इज योर कार्बन। अब आप इस पे किसी ग्रुप को लेकर आ रहे हो, ये ग्रुप यहां से भी आ सकता है, ये ग्रुप यहां से भी आ सकता है। अब कार्बन आपका क्या है? पॉजिटिव। कार्बन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। यू आर ब्रिंगिंग सम नेगेटिव ग्रुप टू इट, सो व्हेन दिस नेगेटिव ग्रुप इज कमिंग, यहां फ्रंट में कुछ नहीं है, क्या है?
negative group is coming to partial carbon positive, it will make a bond. But in this back side पे आप ये सोचो, ये ऐसे थ्रू मी मैंने एक ऑक्सिलरी प्लेस की है, ये मैंने एक एरोमेटिक रिंग यहाँ पे हैंग कर दी है इस फेस में. अब बताओ X नेगेटिव इज प्रेफर टू कम फ्रॉम दिस साइड, और इसको तो ये एरोमेटिक रिंग बीच में है, इट हैज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास नेगेटिव चार्ज है, आप यहां से नेगेटिव चार्ज का ही स्पीशीज लेके आ रहे हो, तो क्या होगा यहां पे? रिपल्शन. ठीक है, तो अब ये एक कार्बन था, मैंने इसके साथ एक ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जिसके पास एरोमेटिक रिंग है. अब ये एरोमेटिक रिंग हैंग हो रही है 3 स्पेस में. ओके, तो ये ऐसे हैंग होके इसके साथ ऐसे पीछे आ गई. ये आगे भी कर सकते हैं, ये आगे आ गई. तो आपका अटैक किस पे होना है? पार्शियल कार्बन पॉजिटिव पे. तो फिर आपने काम क्या किया? आपने 2 फेस में से एक फेस की सिलेक्शन कर ली, दूसरे को ब्लॉक कर दिया. तो उसको बोलते हैं फेस ब्लॉकिंग और डायास्टीरियोफेशियल सिलेक्शन. अब वो डायाफेशियल सिलेक्शन क्या थी? इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन दैट नेप्थोल मॉलिक्यूल होता है, एनी कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप. अब आप जनरेशन सेकंड में जाओ. जनरेशन सेकंड में आपने क्या किया था? साइक्लोहेक्सेनोन था, उसके ऊपर कोई कायरल यूनिट नहीं थी, आपने एक ऑक्सिलरी प्लेस की थी. उस ऑक्सिलरी का काम क्या था? वो 3 डिमेंशन स्पेस में ऐसे हैंग करे कि उसके जो नेगेटिव ग्रुप है वो एक साइड इकट्ठे हो जाएं. When they come together on one side, they will create an electron density. So the incoming group already is a negative one, it will repel. From the other side, it has an open space. So that is called phase blocking. So the question comes that in asymmetric synthesis, how will you create a non-equivalence? We are creating a non-equivalence in a way that with the reagent, okay, we create a such type of environment where one group is present, the other is open, so that the incoming group can easily enter. Okay, so according to you, now very simple, as a chemist इसका मुझे आंसर आपसे चाहिए. अगर हम कार्बोनाइल पे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फेस ब्लॉकिंग के लिए हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने चाहिए? विच मस्ट हैव सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. फ्लोरीन ग्रुप हो, एरोमेटिक रिंग हो, ताकि जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है आपका क्या है? RMgX. तो R इज योर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग. तो उस न्यूक्लियोफाइल के एंट्री के समय आपने वहीं पे एक नेगेटिव चार्ज की शील्ड रख दी, तो क्या वो आगे कार्बन पॉजिटिव तक पहुंच पाएगा? ओके, इफ यू हैव this carbon positive or this nucleophile is coming towards it, and in between you place a sheet of negative charge, will it come close to this carbon? That means what you have done, you blocked it. So what you can block? Either the front face or back face, upper face or lower face. तो